Good evening, everyone. So this is the second part of the chapter Animals Lifestyle in the first class fifth. In the first part, we have discussed regarding organs for breathing in insects and the different adaptations in the body of the animals which they have in order to survive in the environment. Okay. Now in this, we'll go through the organs for breathing in aquatic animals. Now you see what are aquatic animals. Aquatic animals are those animals which live in water. The aquatic word is actually derived from the word aqua, and aqua is a Latin word which means water in English. Okay, पानी को हम Latin में कहते हैं aqua. So all the aquatic animals which are there ना, fish, prawns, crabs, tadpoles, they all breathe through their special organs that are called as gills. Gills, gills. ये गिल्स जैसे हमारे पास नोज है, लंग्स है ब्रीथ करने के लिए, हम टेरेस्ट्रियल हैं, हम लैंड पे रहते हैं तो वी आर टेरेस्ट्रियल. तो वैसे ही जो पानी में रहते हैं एक्वेटिक एनिमल होते हैं, उनके पास नोज या लंग्स नहीं होते, उनके पास क्या होता है, गिल्स होते हैं टू ब्रीथ इन दी ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन तो हर किसी के लिए जरूरी है ना. वी हैव हर्ड, वी हैव रेड अबाउट दिस कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी एनिमल लिविंग ऑन द प्लैनेट. ईदर ही द एनिमल्स लिविंग इन वाटर, he is flying in air, or the particular animal he is living on land. हर किसी के लिए जरूरी है. तो जब हर किसी के लिए जरूरी है तो फिर aquatic animal कैसे लेंगे, क्योंकि वो तो पानी में है. they cannot breathe in air from the air. जो एयर में हमारी ऑक्सीजन है वो ब्रीथ इन नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, गिल्स का यूज करते हैं. एंड विद द हेल्प ऑफ दीज गिल्स द वाटर इट फ्लोज ओवर द गिल्स, एंड दीज गिल्स दे एक्चुअली एक्सट्रैक्ट, मतलब जो पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, घुली हुई ऑक्सीजन जो होती है, उसको एक्सट्रैक्ट फ्रॉम देयर एंड यूज इट फॉर दी use it, and that oxygen is being used by the body of the animal. Okay, now this is clear. Now the next point, okay, I'm not going according to the points which are given over here, I'm explaining it. You can go through the notes which are given in the video. Fine. तो गिल्स क्या होते हैं, गिल्स जो होते हैं वो फिश की बॉडी प्रेजेंट होते हैं. यू मस्ट हैव सीन नियर द आईज ऑफ द फिश देयर अ कट ओवर देयर. दैट कट इज एक्चुअली कॉल्ड एज गिल स्लिट, and this slit is present on both the side of the body of the fish. Okay, you can see in the pic over here, this is actually gill slit. You can see a slight cut over here. This is actually gill's slit. Okay, under this gill slit are the gills, and they are covered with the bony structure that is called as operculum. In the next slide we'll see this with the help of the okay pictures. Okay, now you see what is operculum actually. This bony part, this is open. ये आप यहाँ पे पिक में open है, but you must have, ये देखिए ये जो ये part है, you can see in the second pic, this bony part is actually called as operculum, and the function of the operculum is understood. It is obvious that it protects the gills. Gills को protect करता है operculum. ये bony होता है, इस पे flesh होता है, लेकिन ये अंदर से bones भी होती है इसमें, और ये क्या करता है, gills को protect करने के लिए काम आता है. अब gills में क्या होता है, what are gills made up of? Gills are actually made up of gills filament. बहुत सारे filaments होते हैं छोटे छोटे जो gill arc बनाते हैं. You see over here, these are the small filaments. You can see small lines of there. These are actually filament, and they contain blood. They have abundant blood supply, इसलिए red color के होते हैं gills filament. और gills filament क्या करते हैं, ये अरेंज्ड होते हैं इन अ फॉर्म ऑफ आर्क. आर्क मतलब एक आर्क के फॉर्म में अरेंज होते हैं, और उसके अंदर ये उनके अंदर काफी सारा ब्लड होता है गिल फिलामेंट्स में. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्लड ओवर देयर? फंक्शन क्या होता है ब्लड का, जब पानी जैसे ही इन गिल्स के ऊपर वाटर की सप्लाई होती है, वैसे ही द ऑक्सीजन विच इज देयर इनटू द वाटर इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड बाय दिस गिल्स फिलामेंट. द गिल्स फिलामेंट इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं वाटर का, एंड द ब्लड प्रेजेंट ओवर देयर कैरी द ऑक्सीजन ओवर देयर. सेम इज अ प्रोसेस कि कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी प्रोसेस से बाहर आती है. द गिल्स फिलामेंट ओवर हियर यू कैन सी, यहाँ पे ब्लड होता है दैट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड. अब जैसे ही just as soon as the water flows over the gills, the oxygen is taken up by the blood, and the carbon dioxide is released into the same water. So I hope this is clear. When the water flows through the gills, exchange of gases take place. Okay, I am not going according to the notes over here. I'm just giving you the explanation. You can go through the notes over here, and if you want these notes, you can surely put it down in the comment section. Okay. Okay, now we are coming to breathing in frogs.
Okay, one more thing is I want to discuss. We have discussed regarding fishes, but when I was talking about the aquatic animal in the first slide, I haven't mentioned about frog. Why? Because frog is actually not a not a pure aquatic animal. Frog is an amphibian. And what are amphibians? Amphibians are those animals which can live in water also and which can live in land also. Means they have two behavior, one on land and second on water. Now you come to the breathing process. Suppose a terrestrial animal like a dog, a tiger, or if you we talk about human beings also, if they are inside the water, what will they do? They'll swim and they have to come out for after some time to take in the oxygen. But ऐसा frogs नहीं करते. Frogs, they live in water and they do not come out for oxygen. They have two breathing systems. Okay, frog is the animal which has two breathing systems. Why? Because one breathing system is used on land and the second is used in water. Actually, if you see this whole cycle of the frog, whole life cycle of the frog, जो मेटामॉर्फिज्म होता है, मीन्स जब वो फ्रॉग टैडपोल होता है, टैडपोल से जब वो फ्रॉग बनता है, आप इस पूरे प्रोसेस में देखें तो पूरे प्रोसेस में 3 ब्रीदिंग सिस्टम्स होते हैं. एक टैडपोल के पास होता है, एंड now you see they have three breathing systems throughout their life cycle. One is with tadpole and 2 breathing system with frog, adult frog actually. The frog is an amphibian actually which live both on water and land. Now why the tadpole? They breathe through gills. For this you have to go to the life cycle. What happens? The female frog, it lays eggs inside the water only. वो जो फीमेल फ्रॉग होती है वो एग कहाँ ले करती है? वाटर के अंदर ही ले करती है, नियर सम पॉन्ड में किसी या फिर किसी रिवर के साइड में. वो eggs जो ले होते हैं they are present inside the water body only. Okay, what happens when the egg hatches out? When the egg hatches and the baby comes out, जब ही egg hatch होता है baby it comes out, so it does not have the capability to breathe in air क्योंकि egg वहाँ पे थे वाटर में, और जो बेबी हैच आउट होके आया है जिसको हम टैडपोल कहते हैं. यू कैन सी इन द पिग टैडपोल इज ओवर हियर, यू कैन सी द पिग टैडपोल. It does not have the ability to breathe in air. So these tadpoles, they actually stay in water only and they stay in water till they do not become the adult frog. जब तक ये frog में convert नहीं हो जाते हैं, बड़े नहीं हो जाते, तब तक ये पानी में ही रहते हैं. That is why tadpoles, they have the gills, G-I-L-L-S, gills they have to breathe in the oxygen and breathe out the कार्बन डाइऑक्साइड. अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस को किसी ना किसी तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस जरूरी है. ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय द एनिमल्स. तो इस वजह से इनके पास गिल्स होते हैं so that they can take up the oxygen in the same manner the fishes take in the oxygen. Okay, वैसे ही dissolved oxygen को ये अपने gills के through body में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को in the same water it is being given out. So amphibians में जो adult tadpole होता है it is not an amphibian. Tadpole water में ही रहता है. As soon as the metamorphism goes on, as it changes into an adult frog और grow करता है, वो adult frog में क्या होता है? Adult frog में 2 सिस्टम आ जाते हैं breathing के. One is through the lungs. Now the gills they are gone. अब frog में पहला सिस्टम है lungs का. Lungs होते हैं, lungs कहाँ यूज होते हैं? जहाँ हम यूज करते हैं यानी कि लैंड पे. If the frog एडल्ट फ्रॉग का जब हमने बात की एडल्ट फ्रॉग की, तो एडल्ट फ्रॉग करता है लैंड पे ब्रीथ करता है थ्रू विद द हेल्प ऑफ इट्स लंग्स. जैसे ही मेटामॉर्फिज्म से होकर के एडल्ट फ्रॉग बनता है वो गिल्स की जगह पे आ जाते हैं लंग्स वहां पे, और लंग्स अब कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको हेल्प करते हैं टू ब्रीथ ऑन लैंड जब तक वो लैंड पे. बट अगेन द फ्रॉग इज एम्फीबियन से वापस जाना है पानी में रहने. Then what happens? गिल्स तो है नहीं, अब या तो गिल्स होंगे या लंग्स होंगी, एक चीज होगी, दोनों चीजें नहीं हो सकती एक साथ. In that case what happens? The moist skin, you must have seen the frog, its skin is very soft, very slippery and shiny, और बहुत ही it looks like as if you will catch the frog and he'll slip out of your hands. Yes, because of its skin, moist skin बहुत ज़्यादा moist होती है, and this skin only helps the frog to breathe inside the water. पानी के अंदर वो इसी के through breathe करता है. Okay, so I hope this is clear. 3 functions, 3 ways in which the frog breathe. One is with tadpole, that is gills, and 2 with the
adult frog, that is lungs and moist skin. Okay, now moving in to the next topic with is breathing in the higher animals. Higher animals mean like human beings, birds, reptiles, adult amphibians like frog. Okay, breathe through their lungs. They have the one which breathe through their lungs. They have two lungs. Like human beings, they have two lungs. And now we'll see a few things about human lungs. So first point is what lungs, they are basically two in number in human body and they are situated on either side of the heart. एक heart के इस side पे होता है, दूसरी side पे होता है heart के, and they are spongy elastic bags. First thing is they are spongy elastic bags. Why they are spongy and elastic? The question arises over here. The answer to this is that if the lungs are not spongy or they are not elastic, the person will not be able to breathe in or breathe out. For example, when you fill the balloon with the air, what happens? The balloon will start expanding, and when you pull out that air, or you try to flatten the balloon, the air comes out, and what happened to the balloon? The balloon, it becomes flaccid or it contracts. Okay, it becomes small in size. This can only happen if the balloon is made up of some elastic material like rubber. But if the balloon is made up of some metal, some of the metal, will we be able to do with the help of air? No, that will be much tough for it. और अगर ऐसे ही अगर lungs में elasticity नहीं होगी, तो when the person will breathe in and breathe out, the air उसको जगह कहाँ मिलेगी body में आने की? For आप खुद करके देखो. When you breathe in, what happens? The lungs, they expand, and when you breathe out, what happens? The lungs, they become flaccid, or they contract, or they become small in size. That is why, to give the air the space, the lungs, they are made up, they are elastics and they are spongy. Okay, now you see the lungs anatomy, human lungs anatomy. The passage of the air in the human body is like this. Firstly, air passes into the nasal cavity through your nose. This nasal cavity starts from here, from these two nostrils, and then there's a nasal cavity. Then next part is pharynx. The air passes through the larynx. Larynx is also called as voice box. This larynx only continues into trachea. Trachea is the windpipe. Okay, trachea is also called as windpipe. And this windpipe or the trachea, it divides into two parts or called as bronchi. This one trachea, it divides into two parts and enters one each lung. That is when they divide, it becomes bronchi. Trachea ही है. Trachea जब दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यहाँ से वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, one bronchi, two bronchi, and these bronchi, they continue to divide over here. You can see the small branches of the bronchi. These branches of the bronchi are called as bronchioles, and these bronchioles actually reach the finest part of the lung. जो lungs के मतलब lungs के finest या सबसे दूर यहाँ तक भी bronchi फैले होते हैं. Suppose this is the lowest part of the lungs और the farthest part of the lungs, और trachea के लिए सबसे दूर यही part होगा. तो यहाँ तक bronchioles these are spread so that the whole lungs, they can be filled with the air. Okay, so bronchi, these are tiny tubes inside the lungs. This trachea only divide into two and become bronchi, and it is called as bronchi over there. And फिर ये bronchioles होते जा और fine इसकी branches आती जाती हैं, जिससे कि वो lungs के पूरे lungs को cover कर सके. Okay, they can carry the air to the finest air pocket. See, lungs, they have air pocket. Finest air pocket means जो सबसे छोटी या सबसे अंदर की साइड में air pocket हो, वहां तक भी air पहुंच पाए. That is why they are so finely branched up. Okay, तो I hope this is clear कि bronchi की उसका passage क्या है. का first is nasal cavity, then pharynx, then larynx, and then trachea, and trachea divides into the bronchi. This whole cavity is this whole is a one passage, only the name is different according to the area where it is situated. Larynx is also called as voice box. Now the lungs, it has bronchi to provide the air to all the parts of the body. Now what will happen? सिर्फ air से तो काम नहीं चलेगा. Air अगर आ गई है lungs में, तो उसको blood कैसे carry करेगा?
the blood in our body carries the oxygen which is being inhaled. जो हमारी बॉडी में इनहेल होकर ऑक्सीजन आती है उसको कौन कैरी करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है. ओके, सॉरी, ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन को, ब्लड कैरी करता है. तो ब्लड कैसे कैरी करेगा? वहां ब्लड का आना भी तो जरूरी है. अगर लंग्स तक एयर आ रही है, एयर इज रीचिंग आउट द फाइनेस्ट प्लेस ऑफ द लंग, प्लेस ऑफ द और फाइनेस्ट पॉइंट ऑफ द लंग्स. सो the blood has to be there, and the blood is present inside the lungs with the help of capillaries. These are the finest blood vessels. बहुत ही छोटी महीन सी capillaries are very fine का मतलब है बहुत ही पतली, ओके, जिसे हम कहते हैं बहुत ही हल्की और बहुत ही पतली सी blood vessels होती हैं through which blood comes to the lungs. अब देखिए, bronchi से क्या आया? एयर आई, और capillaries के थ्रू क्या आया? ब्लड आया. So both the things are there in the lungs. ब्लड है जिसको कैरी, ब्लड इज देयर जिससे कैरी, जिसको लेना है ऑक्सीजन, एंड एयर का भी पैसेज है जिससे ऑक्सीजन आना है. ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर कि एयर का पैसेज क्या है. ब्रोंकाई के थ्रू एयर आती है लंग्स के अंदर, और कैपिलरीज के थ्रू ब्लड आता है. अब यहीं पे ये एयर जो है, इससे ब्लड जो होता है, इट कैरीज द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. और ये कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ एल्वेलाई. एल्वेलाई आर एक्चुअली टाइनी एयर सैक्स. ये बहुत, यू कैन सी ओवर हियर इन द पिक्चर, दिस इज द डायग्राम ऑफ एल्वेलाई. ये बहुत छोटे से एयर सैक्स की टाइप के होते हैं, एंड दे कैरी बोथ द थिंग्स. they have the capillaries also, and bronchi also reaches them. So what happens? Suppose this is the capillary. Okay, you can see in this diagram, and firstly I'll make you clear what are alveoli. Alveoli are tiny sacs that are function as basic respiratory unit. alveoli जो होते हैं वो basic respiratory unit की तरह काम करते हैं. मतलब इनमें ही एक्सचेंज होता है गैसेस का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का. ओके, सो यू सी ओवर हियर, दिस इज द एयर सैक ओवर हियर, दिस इज द एयर सैक ओवर हियर. ओके, ये यहाँ पे एक एयर सैक है, ये एल्वेलाई की वॉल है. दिस इज एल्वेलाई और एल्वेलर वॉल है. ये एल्वेलाई है और इसी के पास से कैपिलरी भी जा रही है. द कैपिलरी सिचुएटेड जस्ट नियर टू इट. What happened? The air comes inside the alveoli. ऑक्सीजन में आती है और कार्बन डाइऑक्साइड इसी alveoli से बाहर जाती है. What happens? As soon as the air enters into the alveoli and the capillary is just near to it, so the oxygen is taken by the blood in the capillaries. अब alveoli तक आ गई है एयर. ओके, उसी के just next to it is there a capillary which is carrying the blood. The blood has to take in the oxygen from the air present inside the alveolar sac. Okay, alveolar की जो वॉल है उसके पास कैपिलरी है, और यहाँ से ब्लड क्या करेगा? इस एयर से ऑक्सीजन को ले रहा है. यहाँ पे यू कैन सी ओवर हियर, this O2 is being taken inside the blood, and carbon dioxide is given out into the same air. And then what happens when you inhale and when you hold on till in that quick time, in that just in the when you flip your eyes, the oxygen is taken inside the blood and the carbon dioxide is released into the same air from which the blood is from which the oxygen is being taken in. और इस तरीके से ये respiration complete होता है. And this respiration or this process is actually called as alveolar respiration. Because it take place with the help of alveoli, it is called as alveolar respiration. Okay, so I have explained much beyond of class 5th, but still this much is okay. You need to have some basic concept for this. So if you have any problem in this topic, or if you need more explanation than this, I can go further in the explanation. So for which I have to make another slide, because एक slide में ये नहीं हो सकता. ये respiration एक पूरा बड़ा topic है. respiration के ही टॉपिक पे ही 2-3 पीपीटी तैयार हो सकती हैं. सो दिस इज जस्ट द जिस्ट आई हैव गिवन. मैंने आप लोग को एक समरी दे दी है कि वो कैसे होता है, क्या ट्रैक होता है. फर्स्ट पिक इज रिगार्डिंग द ट्रैक of the air. Second is how the exchange of gases take place. Okay, so इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो you can go through the explanation again and put it down in the comment section if you face any problem. So इसके आगे जो मैंने इनहेल और एक्सहेल प्रोसेस बताया, दिस इज सेम प्रोसेस, और इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. ऑल्दो आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर, बट वी कैन गो थ्रू दिस पॉइंट्स वंस. ओके, नाउ इनहेल एंड एक्सहेल प्रोसेस क्या होता है? इनहेलिंग थ्रू द नोज. इनहेल क्या होता है? When we take the air inside, that is called as inhale. The air goes to the lungs which expands. As soon as we inhale, the lungs they expand.
I have made you clear earlier also. You can try it on your own also. You do it, but you do it with your subconscious intention. Okay, you don't know that you are doing the same inhaling exhaling process, but it is happening because of the subconscious intention which is there. Or when you just put an attention to it, then you see when you inhale, the lungs area, it actually expand, and below the lungs, the diaphragm also, you can see this yellow sheet. This is also called as diaphragm. It also has certain function, and when you inhale, the diaphragm is pulled down, the lungs, they expand. Over here you can see the person is inhaling, and lungs, they are increasing in their size. Okay, the exchange of gases take place here. The oxygen is carried by the blood. अब मैंने आपको बता दिया कि वो एल्वियोलर सैक में आता है ऑक्सीजन, एयर आती है, फिर एल्वियोलर सैक से जो कैपिलरीज वहां हैं जिनमें ब्लड है, वो ब्लड ऑक्सीजन को ले लेता है एयर से, और उसी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कर देता है. मींस एयर एक मीडियम है ऑक्सीजन आने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड उसी में ही डिसॉल्व होकर बाहर आ जाती है. तो यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है. पहले हमने इनहेल किया, फिर एक्सचेंज होता है. इनहेल के बाद डायरेक्ट एक्सहेल नहीं होता है, इनहेल होता है, फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, and then come the exhale process, and carbon dioxide is taken up by the gas, and this gas is exhaled by the nose. जैसी कार्बन डाइऑक्साइड उस गैस में वापस आ गई, एयर में वापस आ गई, then the exhalation process take place. The gas carrying carbon dioxide is given out in the atmosphere. You see, when you breathe in, this happens, the diaphragm goes down, the lungs, they expand, and when you breathe out, the diaphragm goes up, and the lungs, they contract and they become small in size, and this process continues without your आपकी इसमें कोई intention नहीं होती है. Since you are born, you do it without any intention. This is there into your subconscious intention. Subconscious mind में already feed होता है, and these all the things which are there, which are involuntary. Involuntary means आप उसको control नहीं कर सकते. Voluntary actions क्या होते हैं जिनको हम control कर सकते हैं. For action, pumping your hands like this, or clapping, these all are voluntary action. You do it with your volunteer करते हैं हम इनके actions के लिए. volunteer करना, जैसे कहते हैं ना, इस काम के लिए volunteer करो, तो हम voluntary actions वो होते हैं जिनको अपने मन से करते हैं. हम जैसे हम volunteer अपने मन से करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या किसी भी पार्टिसिपेशन के लिए भी volunteer, तो voluntary actions भी वैसे ही होते हैं जो इनके लिए हम खुद काम करते हैं, जो हम खुद अपने मन से करते हैं. लेकिन involuntary क्या होते हैं, जो हम पे पता भी नहीं होते, like blinking of your eyes. You don't know, but you blink your eyes. You don't do it intentionally, but it happens. Pumping of your heart is involuntary. You do not have the control over your involuntary actions. Pumping of your heart, or you can say breathing in, breathing out, these are involuntary actions. You do not have control over it. Once you eat the food, the digestion of the food is involuntary. You cannot help it. You cannot stop the digestion after you eat the food. आप food खाने पे volunteer कर सकते हैं, आप खाता है या नहीं आपकी मर्जी है, पर खाने के बाद उसका digestion होगा, ये involuntary है, वो होगा ही होगा. You cannot control that. Okay, so I hope this is clear कि आपको ये जो respiration है ये भी involuntary है, आप इसको control नहीं कर सकते. This happens. Okay. So I hope this is clear. In the next slide, we'll see the third part of this chapter. I'm explaining this chapter in small parts so that the explanation is better. If we go through the whole thing in one chapter, it will be much more tough. Okay. और शायद एक्सप्लेनेशन तक तो अच्छा नहीं हो पाएगा. तो एक्सप्लेनेशन को बेटर करने के लिए इट इज बेटर टू ब्रेक द चैप्टर इनटू स्मॉल पार्ट एंड देन गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन. So thank you for watching, and do press the like button, subscribe the channel, and tell your friends if they need it. Okay, now one more thing I want to inform you about is I'm going to put some chapters related to English grammar over there. Okay, so keep updated. Okay, thank you for watching.